I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. यो गाइस, तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं एंड केमिस्ट्री 2 घंटे लगातार रगड़ने के बाद, काफ़ी कुछ केमिस्ट्री में लिखने के बाद मज़े से एकदम मस्त, अब मन कर रहा है बाहर जाने का, क्योंकि माइंड ऑफ हो चुका है पूरा। यार लगातार नहीं पढ़ा जा सकता, पता है, यू नीड टू गिव योर माइंड सम टाइम। सो उसी के लिए अब जा रहे हैं बाहर, अब सीधे रात को बैठेंगे। बाहर से आने के बाद तब तक के लिए पीस आउट। One eternity later. तो अभी बजने जा रहे हैं 8 PM, यानी कि पढ़ने का टाइम हो चुका है। अब लेट्स कंटिन्यू द स्टडी ब्लॉग। शीश। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, रात के बज गए 1:45। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. So the time is already 4:14 एंड 2 घंटे मैथ्स करने के बाद मैं विला बैठा हुआ हूँ, इस सोच में डूबा हुआ हूँ कि करे तो करे क्या। तो फाइनली दिमाग में आया कि इंग्लिश कर सकते हैं। क्या पहला एग्जाम इंग्लिश का ही है, बोर्ड्स का, वही करना होगा। सुबह के बज रहे हैं 6। हाँ, मैं अभी तक सोया नहीं, इंग्लिश पढ़ रहा था एंड मेरा चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो लाइक जस्ट लुक, कितना सही लग रहा है ये सनराइज यार। मतलब इतना ब्यूटीफुल सीन देखना है तो भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरी रात जग जाओ, सोई मत, या फिर सुबह जल्दी उठ जाओ। हमने जगने वाला रास्ता चुन लिया। अभी तक सूरज दिखा नहीं है, बट दोस्त कलर्स आर आई कैचिंग। घर के सामने वाली साइड आने के बाद अब चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा है स्ट्रीट लाइट की वजह से, एंड काफ़ी सही सुबह है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है। जैकेट मुझे इसलिए पहनना पड़ा कॉज अंदर के कंपैरिजन में थोड़ी ठंड है बाहर, बट स्टिल द टेम्परेचर इज़ प्रिटी वेल एंड मतलब बहुत सूदिंग लग रहा है जो अभी इस वक्त का ये है ना मोमेंट, जो है बहुत सूदिंग लग रहा है आइज़ को एंड फुल बॉडी को, माइंड पे रिफ्रेशिंग लग रहा है, लाइक इट्स सो नाइस। एंड ये देखो, स्टैनली, इग्नोर्ड। भाई साहब दिस व्यू, ये देखने के लिए तो मैं अब रोज जगह करूँगा। भाई ये मेरे ही मोहल्ले का दूसरे साइड का हिस्सा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मेरा ही मोहल्ला है भाई। पता है यार, नींद नहीं आ रही है। मतलब अकेले घूमने में मज़ा भी आ रहा है, मन नहीं कर रहा है कि सोऊं जाकर, शायद इसलिए नींद भी नहीं आ रही है, बट मन कर रहा है कि सो भी जाऊं, cause पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, डबल माइंडेड हो रहा हूँ राइट नाउ। तो क्या करें, टहलते रहते हैं कुछ देर, थोड़ी देर बाद पक्का मम्मा जी का कॉल आएगा, मम्मा जी कॉल करके बोलेंगी क्या कहाँ निकले हो सुबह सुबह, रात भर तो सोए होगे नहीं। हाँ मैं कहाँ, ऐसे ही एकदम हवे में कदी भसड़ मचा दी यही सब आएगा कॉल पे, तब तक वेट करते हैं। तो घूम फिर कर वापस आ चुके हैं अपने मोहल्ले पे एंड व्लॉग कितना ही खींचेंगे, यहाँ पे करते हैं व्लॉग को ख़त्म, अगले व्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।